Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you will be fine. You'll be doing great. My name is Karim Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we're going to discuss what is predicate adjective. A very important class. Adjectives तो ऐसे words होते हैं जैसे I love adjectives and everybody loves adjectives. So, आज हम बात करेंगे predicate adjectives की. अगर आपने इससे पहले हमारा जो क्लास था predicate nominative नहीं देखा तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाके सेंटेंस प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं. क्लास लेट गेट स्टार्टेड. predicate adjective. predicate adjective. क्लास मैंने जो बताया था जब प्रेडिकेट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया. व्हाट इज प्रेडिकेट? अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट द सब्जेक्ट इज. एक्टिविटी या स्टैट को जाहिर करता है. मैंने आपको उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था. प्रेडिकेट दैट शोज एन एक्शन एंड प्रेडिकेट दैट शोज स्टेट. एक्शन में हमने बताया था सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट. उस पर अलग अलग वीडियोस मौजूद हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. प्रेडिकेट दैट एक्सप्रेसेस और एक्ट शोज स्टेट ऑफ बीइंग, उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था. प्रेडिकेट एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेट नॉमिनेटिव. प्रेडिकेट नॉमिनेटिव पे हमने हमारी क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. आज हम बात करेंगे प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स की. क्लास वेरी सिंपल. व्हेन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज comes after the linking verb to describe the subject. Class, what is predicate adjective? When adjective or adjective phrase comes after the linking verb. Why? To describe the adjectives, to identify, to modify the subject, to describe the subject or modify the subject. Class, adjective or adjective phrase जब linking verb के बाद आते हैं. What are linking verbs? Class, is, am, are, was, were, will be वगैरह के बाद जब कोई noun, कोई adjective हम लगाते हैं तो उसको बोलते हैं linking verb. They only link the subject with its predicate. Clear? They do not show any action or anything. ये कोई action को जाहिर नहीं करते. They just link the subject with its predicate. इसलिए हम इसको बोलते हैं linking verb. तो class linking verb के बाद जब कोई adjective और adjective phrase आता है, why? To describe the subject. कि उस subject को describe करे, identify करे, उसको मज़ीद एक्सप्लेन करें, मॉडिफाई करें, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल क्लास हम बोलते हैं कासिम लुक्स हैप्पी. Qasim looks happy. In this sentence, Qasim is the subject of this sentence and happy is an adjective. This looks just links the subject with its predicate. It doesn't do anything else, etc. It doesn't show any action. We say Qasim looks happy. Qasim खुश दिखाई देता है. इस looks के बजाय अगर हम is लगाएं, Qasim is happy, still it has complete meaning. looks को आप is, am, are वगैरह से आप उसको इंटरचेंजेबली आप उसको चेंज कर सकते हैं. तो इसका पता चला कि ये जो लुक, फील, साउंड, सीम्स, टेस्ट, स्मेल्स, ये क्या है क्लास? ये भी हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स है. बिकॉज दे डू नॉट डू एनी एक्शन, दे जस्ट लिंक द सब्जेक्ट विद इट्स प्रेडिकेट. सो कासिम लुक्स हैप्पी. हैप्पी इज द एडजेक्टिव. कौन हैप्पी है? कासिम हैप्पी है. कासिम कौन है? वो जो हैप्पी है. तो क्लास इज जस्ट इस हैप्पी ने कासिम के मूड को यहाँ पे क्या क्या है? डिस्क्राइब किया है. दैट ही फील्स हैप्पी. कासिम फील्स हैप्पी, कासिम लुक्स हैप्पी, कासिम सीम्स हैप्पी, कासिम इज हैप्पी. तो ये हमारे पास क्या है क्लास? प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स. और हम बोलते हैं क्लास लोबाबा is
a tall girl. Lubaba is a tall girl. Lubaba क्या है class? Lubaba is the subject of this sentence because this sentence is about Lubaba. Is यहाँ पे क्या है class? एक linking verb है और tall girl एक adjective phrase है जो क्या करता है, जो Lubaba को explain करता है. Who is Lubaba? Who is a tall girl? Lubaba एक जो लंबी लड़की है, जो कदावर लड़की है, वो क्या है? Lubaba एक कदावर लड़की है. So a tall girl is an adjective phrase and it describes the subject Lubaba. तो ये हमारे पास क्या क्लास क्या हुआ? ये हुआ predicate adjective. आगे इसके और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए. The child looks busy. The child looks busy. The same class. Busy यहाँ पे adjective है. Looks busy ये पूरा आपका क्या हो class? Predicate adjective. Clear? The child जुमला child के बारे में, ये तो ये आपका subject हो गया. Clear class? He is handsome. खूबसूरत लड़का है. He is handsome. Handsome यहाँ क्लास आपका हो गया adjective. is यहाँ पे linking verb और ये handsome डिस्क्राइब करता है he को, सब्जेक्ट को. तो ये हमारे पास क्या है क्लास? This is an predicate adjective. Clear? या हम बोलते हैं this book is expensive. ये किताब महंगा है. This book is expensive. Expensive an adjective डिस्क्राइब करता है बुक, किताब को. is यहाँ पे linking verb. तो ये पूरा का पूरा क्या बने क्लास? predicate adjective. The same. और हम बोलते हैं the chair is broken. कुर्सी टूटी हुई है. The same class. broken यहाँ पे आपका हो गया पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि एडजेक्टिव के तौर पे हमने यूज़ किया हुआ है. ब्रोकन एडजेक्टिव है, चेयर को एक्सप्लेन करता है. द चेयर इज़ ब्रोकन इज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब. तो ये क्या हुआ क्लास? ये आपका हो गया प्रेडिकेट एडजेक्टिव. क्लियर? ज़हन में क्लास ये बात याद रखें कि एक सेंटेंस में दोनों भी आ सकते हैं, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव एंड प्रेडिकेट एडजेक्टिव. क्लियर? जस्ट फॉर एग्जाम्पल Sarah is a teacher and is happy. Sarah is a teacher and is happy. Class Sarah is a teacher. Is a teacher. यहाँ पे is a teacher मैंने आपको बताया थी प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है, क्योंकि सारा के बाद क्या एक वर्ब आया है. ये वर्ब रिनेम्स करता है सारा को. मीन सारा इक्वल्स अ टीचर. सारा इज अ टीचर एंड इज हैप्पी. इज यहाँ लिंकिंग वर्ब एंड हैप्पी यहाँ पे आपका क्या क्लास क्या है? एक एडजेक्टिव है. तो इन दिस सेंटेंस यू कैन मेंशन बोथ प्रेडिकेट एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्लास. तो आज के क्लास में हमने जस्ट पढ़ा व्हाट इज प्रेडिकेट एडजेक्टिव. प्रेडिकेट एडजेक्टिव वो लफ्ज़ अल्फाज एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज जो लिंकिंग वर्ब के बाद आए और सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव. उम्मीद करता हूँ आज के क्लास में अपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा. दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे जो ग्रुप्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वहाँ भी शेयर करें. और आप अगर हमारी जो मेरी रिटन बुक है रोड वे टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, अगर आप वो मंगवाना चाहते हैं जो जिससे हम ये सारे क्लासेस लेते हैं, तो वो भी आप अपने करीबी जो आपका बुक सेलर है और रिटेलर है, आप उनसे भी ले सकते हैं. स्क्रीन पे आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.